Player BTR kena mengharapkan Korea akan membantu mereka. Mungkin inilah yang mereka harapkan. Opa, tolong saya. Misal, tolong ratakan pasukan OR kerana memang sangat diperlukan. Sudah top 8. Jadi memang lagi kritikal sekarang ini. Ya, jatuh Viru meninggalkan kill. Sahaja mungkin rata. Dan बचते हैं एक ओपन एरिया की फाइट में एंड आरआरक्यू के और प्लेयर्स डाउन हो गए हैं वहां पे। आई बिलीव अब सिर्फ एक या दो प्लेयर उनके बचे। यस देयर दे गो, आरआरक्यू हैव बीन एलिमिनेटेड, सो इट्स ओनली लक्सी रिमेनिंग राइट नाउ हु इज देयर टू चैलेंज ऑरेंज रॉक। इनफैक्ट अब बीटीआर अगर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं तो काफी दिक्कत हो सकते हैं, बट फिलहाल स्काउट और मवी नॉक हो चुके। T1 के प्लेयर्स ने यहाँ पे काफी करारा जवाब दिया है। ऑरेंज रॉक के गिल को किसी भी प्रकार होल्ड करना पड़ेगा, ग्रेनेड को कनेक्ट करना पड़ेगा, बट बेरली यहाँ पे 10 HP पे दोनों प्लेयर्स बचे। सेडन का भी वापसी प्रहार आता हुआ, मिसाइल ने यहाँ पे फिनिश कर दिया मवी को, बट गिल का नेट जाता हुआ। जीजी भी नॉक हो चुके, सेडन भी नॉक हो चुके, यॉनजुन ने स्काउट को फिनिश कर दिया। वीरू और गिल के ऊपर पूरा खेमा आ चुका है। T1 वर्सेस ऑरेंज रॉक, क्या ऑरेंज रॉक इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाएगी? 0 किल्स है इस टीम के पास। वीरू और गिल की जोड़ी बची है। T1 के प्लेयर्स पीछे जरूर है, लेकिन उनके भी 2 प्लेयर्स डाउन है। मिसाइल और यॉनजुन यहाँ पर अपनी टीम के लिए पूरा भार संभाल रहे हैं, लेकिन आप देखिए यॉनजुन जाकर रिवाइव दे रहे हैं T1 के प्लेयर्स को। एक प्लेयर रिवाइव हो चुका है, अब दूसरे प्लेयर की बारी है जो 8 सेकंड रहेंगे रिवाइवल के लिए। बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर बन सकता है, लेकिन T1 के प्लेयर्स क्या वो अब सर्कल में जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि हल्का सा सर्कल से बाहर है। 3 मीटर का डिफरेंस उनके और सर्कल के बीच में आता है। और ऑरेंज रॉक की हम बात करें, उनकी भी मूवमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक तरीके से हर एरिया से आ रहा है। और वीरू को यहाँ पर डाउन किया। T1 के CCP का ग्रेनेड आता हुआ बॉक्स के ऊपर दूसरा फाइट ले, लेकिन ऑरेंज रॉक gets eliminated on the 7th position in this one. That sets it quite up because BTR भी वहां पर एलिमिनेट हो गई है, but then उनका लाइव रैंकिंग के हिसाब से पॉइंट्स है 287 and Orange Rock is at 278, getting that second position. But that was a very harsh thing on Orange Rock. उनके पास जोन था बहुत देर तक, but T1 ने वो 1-2 ग्रेनेड जो उन्होंने डाले, that costed Orange Rock a lot. But right now we can see कि कौन सी बाकी टीम है, कौन सी टीम है जो चिकन डिनर हमारे लिए निकाल सकती है। अब जरूर देखना पड़ेगा। बॉक्स के प्लेयर्स फिलहाल ऑलरेडी यहाँ पे 12 किल्स निकाल चुके हैं। नियो यहाँ पे नॉक होके पड़े हैं, और ऑरेंज रॉक की एलिमिनेशन के साथ 10 लाख दिलों भी यहाँ पे धड़कने जो है काइंड ऑफ टूट सी गई है। बट बॉक्स के प्लेयर्स अभी भी बरकरार करना चाहते हैं अपना स्प्रे। नियो को ऑलमोस्ट फिनिश करते रहेंगे। क्लच कॉर्ड यहाँ पे कोशिश करेंगे अपने टीममेट को किसी भी प्रकार रिवाइव देने की। TSM एंटिटी क्या ये चिकन डिनर निकाल पाएगी? सर्कल के सेंटर पे मौजूद है। T1 के प्लेयर्स भी ऊपर आ चुके हैं, और एक बहुत ही संगीत मोड़ ले चुका है ये मैच। क्या ये गेम TSM के हाथ में जा सकता है? बॉक्स के प्लेयर्स जिंदा जरूर है, 247 पॉइंट्स उनके पास। क्या वो यू लेवल अप से ऊपर जा सकते हैं? एक इंपॉर्टेंट सवाल है। TSM क्या अगर एक अच्छा चिकन मिलता है तो 20 पॉइंट्स उनके पास आएंगे, बाकी किल्स के पॉइंट्स है तो बॉक्स के भी ऊपर जा सकते हैं। टॉप 5 में क्या TSM घुस पाएगी? अच्छे खासे किल्स निकाल करके हम जरूर देखना चाहेंगे। आरसीएस के ऊपर डाउन चुके T1 की यॉनजुन के द्वारा, और यॉनजुन ने फिनिश भी कर लिया है। इमेजिन कीजिए अगर उसने पहले फाइट की होती तो ऑरेंज रॉक यहाँ पर अपने आप को जिंदा देख रही होती, बिकॉज तब इनके ऊपर आरसीएस के प्लेयर्स जरूर प्रेशर डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों जी के बहुत सा रिवाइवल देना चाहेंगे एक एरिया से। T1 के स्टेडियम के सामने आरसीएस के सेरा जरूर है। शॉट्स देने की कोशिश कर, डाउन अभी तक नहीं किया, बट डैमेज बहुत ही ज्यादा दे दिया था इस पूरी फाइटिंग सिचुएशन में। और यहाँ पर आरसीएस के प्लेयर्स भी डाउन हो चुके हैं। 3 टीमें बचती हैं, 10 लोग जीवित। द गेम आई गेस बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। ये वाला ओनली 23 मिनट्स 24 मिनट्स हुए इस गेम में। जैसे कि मैंने कहा था ऑल आउट अटैक होने वाला है, इसमें सारे टीम्स फैल के किल्स उठाने वाली है। रोटेशन बहुत कम देखने मिला हमें इस गेम में, बस टीम्स फाइट लेते ही जोन में घुसी है। एंड देयर यू कैन सी देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पे TSM एंटिटी एक प्यारा सा चिकन डिनर निकाल देंगे। नेक्स्ट जोन एक तरीके से ये चीज हमें फाइनली बता देगा कि अगर ये जोन TSM की तरफ बनता है तो आई एम प्रीटी श्योर कि बॉक्स और T1 तो आपस में लड़के ही एलिमिनेट होंगे। एंड बट ऑन द अदर हैंड नियो हैज बीन टेकन डाउन, हैज बीन नॉक्ड एंड फिनिश्ड। वहां पे T1 के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता हुआ। मैन एडवांटेज बॉक्स के पास बहुत ज्यादा है, बट लेट्स सी अभी क्या होता है। T1 वर्सेस बॉक्स वर्सेस एंटिटी, और T1 के प्लेयर्स के पास हाई ग्राउंड का बखूबी इस्तेमाल उठाते हुए फायदा उठा रहे T1 के यॉनजुन यहाँ पे बॉक्स के साथ भी डील कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली यहाँ पे CCPs TSM एंटिटी के साथ भी डील कर रहे हैं। T1 कुछ अलग ही रंग में चल रही है। यहाँ पे ऑलरेडी 8 किल्स उन्होंने निकाल रखा है, बट जॉनथन का ग्रेनेड आता हुआ। सेडन हो चुके हैं डाउन, दूसरा ग्रेनेड भी आएगा।
देखते हैं क्या होता है। बट यॉन्जो ने ब्रेक को नॉक किया। जॉनथन का दूसरा ग्रेनेड भी ZZB को लेके जाता हुआ। इसी के साथ T1 की स्क्वाड इस गेम से बाहर। बॉक्स वर्सेस TSM यहाँ पर एक फाइट चल रही है। बॉक्स के पास एक प्लेयर डाउन है, लेकिन उसको रिवाइवल मिल जाएगा। 14 किल्स है बॉक्स के पास, 8 किल्स यहाँ पर TSM के पास है, लेकिन आप देखिए ग्रेनेड्स के द्वारा यहाँ पर वापस से लुई को डाउन किया। ह्यूगा वहां पर आगे स्मोक करना चाहते हैं, लेकिन जॉनथन जो इस एरिया के अंदर, जॉनथन और क्लच गॉड, इन दो की जोड़ी 2 वर्सेस 4 क्या यहाँ पर कर पाएगी? लुई को रिवाइवल अभी तक नहीं मिला है, अब रिवाइवल की शुरुआत होगी। जॉनथन आगे मोलोटॉव कर रहे हैं, बट ये दो प्लेयर्स पूरा भार यहाँ पर जो 10 लाख दिल जो अभी अभी टूटे थे उनका यहाँ पर भार लेकर जाएंगे। जॉनथन बचे हैं, क्लच गॉड बचे हैं और बॉक्स के प्लेयर्स है। किल्स बॉक्स के पास ज्यादा है, नंबर्स बॉक्स के पास ज्यादा है, बट जो हमारी यहाँ पर आकांक्षाएं रहेंगी, आशाएं रहेंगी, वो सारी जॉनथन और क्लच गॉड के कंधों पर आ जाती है। ब्रेकिंग एरिया से स्पॉट कर सकते हैं क्लच गॉड उस एरिया पर बैठे हुए। ह्यूगा अपने आप को थोड़ा सा वाइड स्प्रेड रख रहे हैं, दो प्लेयर्स बीच में, एक प्लेयर साइड में, एक प्लेयर साइड में, लेकिन स्पॉट हो जाएंगे यहाँ पर क्लच गॉड के द्वारा। एक प्लेयर डाउन हो चुका है। 2 वर्सेस 3 का सिचुएशन यहाँ पर क्लच गॉड कर चुके हैं। AWM में उनके पास, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ M4 ही काम में आएगी। बैकपैक हटाया जा चुका है, गोलियां कैलकुलेट करके ही लेकर जानी पड़ेंगी, लेकिन जो सर्कल, अगर हम सर्कल लेके, सर्कल बॉक्स के प्लेयर्स के बिल्कुल पैरों में पड़ा हुआ है। बाकी सारे प्लेयर्स बॉक्स के सर्कल में, पिमे खासकर सर्कल के बीच में बैठे हुए। लू एक एरिया पर है, ब्रेक को रिवाइव देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस पूरी सिचुएशन में जाता है। जॉनथन और क्लच गॉड अभी बैठे हुए, कुछ ही स्मोक्स बचेंगे बॉक्स के प्लेयर्स, उनका यूटिलाइजेशन यहां पर शुरू हो चुका है, क्योंकि ये आखिरी स्मोक्स रहेंगे आपको कवर्स बनाने के लिए। 7वां जोन है, जो भी बहुत जल्दी मैच शुरू खत्म होने वाला था, वो मैच अब 3 मिनट और आगे खिंच चुका है। साइड में बॉक्स के ह्यूगा जरूर बैठे, हम बोल रहे थे एक नया प्लेयर आया है, वो नया एडिशन यहां पर बॉक्स को बहुत बेहतरीन देखने को मिल रहा है। जॉनथन बिल्कुल सामने है, ही इज काइंड ऑफ स्पॉटेड, बट अभी भी किसी ने शॉट्स नहीं चलाए हैं। एग्जैक्टली एंड यहाँ पर देखते हैं कि ये 2 वर्सेस 4 सिचुएशन में क्या TSM जीत पाएगी, क्या ये लोग यहाँ क्लच कर पाएंगे। ब्रेक ने अभी तक हील भी नहीं किया है खुद को, बट 2 प्लेयर एक बार डाउन कर चुके हैं। लुई ने वहां पे हल्का सा फ्लैंक मारा है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट कर देगा फॉर जॉनथन। अगर जॉनथन को नहीं पता होगा उसके बारे में, स्टिल यूजिंग यूटिलिटीज, अभी भी स्मोक्स कर रहे हैं वो लोग। टोटल स्नेक गेम। द जोन जहां तक मुझे दिख रहा है जॉनथन जोन के अंदर है, एंड क्लच गॉड अगर बैक स्टैप करते हैं तो बहुत ही ज्यादा बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, बिकॉज जॉनथन क्रॉस, एक तरीके से ये एक बहुत ही बढ़िया क्रॉस फायर है, बट लुई इनके राइट में है, जिनके बारे में आई गेस इन्हें नहीं पता था। एंड यहाँ पर एक ट्रेड लेते हुए, बट it's gonna be very difficult because Jonathan, yes, there you go. Ultimately, Box have come up. Reaksi that stands between Orange Rock and a potentially miracle run here at the Pmwl East. We've seen Luxi before, Miramar yesterday taking out 3 players from Orange Rock. Can he play spoiler once again as the solo? You level up, completely ruin the chances of RRQ. Orange Rock Scout is currently down. Gil is cooking the grenade. It's T1 on the top side. And remember, these guys were so strong in the last game. Another nade on the back. Oh, doesn't quite take down close. ZZP. So close, you're right. Never comes over the top. Being sent through, and it's found ZZP the knock, but the echoing nade is going to do so much damage. 2 players remain now for Orange Rock. Viru and Gil in the ditch, down in the dumps. They need to stand tall. They need to be there to represent South Asia towards the top of the tables. Gil throws out another nade. We don't know if it's good yet. Missile walks away from this one. Viru is kind of off guard. This small ditch, the smoke, all that it is providing the cover. And T1, the young lad in Young Jun, will be able to get his players back up again. And there will be a 4-man unit versus the 2 who are currently crunched into the worst spot ever for South Asia. And Luxi spotted this kill feed. Look at that. He's out in the blue, not moving. I think he might just be trying to snake it in. He might be looking for the zone. Oh, the nade comes in. Viru gets knocked by the team up the hill. Oh no! Oh dear. Orange Rock. Cataclysmic now, and it's Bigatron. They're going to be at the top. There's no one who can challenge them. We found our winners. They get eliminated, but it's not going to matter, Blank. They have won this tournament. Luxi, the solo player, once again notices everything, sees everything. He's the eagle in the lobby and just decides to heal it out and try and go for that placement point upwards. Argue Athena dropped to 3rd. A perfect finish for Bigatron. They managed to hold on to that throne. They are going to be our champions, but now the rest of the table needs to solidify. You're right, Blank. That jump there for Orange Rock to move up the tables towards the end is going to be so crucial as well. That's a $30,000 jump. $50,000 go to Orange Rock, and we can say that they can be proud of themselves. Coming from week 1, having a stellar performance, and then dropping off, trying everything in their power and not giving up once along the way.
secures them a second place spot in this tournament. What a fantastic run from them. What an incredible representation coming in from the South Asian regions. Everybody should be proud of them. Everybody from every single team has put in such work, but they end up in second. Right, let's tune back in with the game to finish things out, as we seem to have once more the old, tried, true and tested box fort. Box fort down to the southeast side, holding on for as long as possible. Even without Loki in the game, they've still done fairly decently with Hugo, who drops in, but it's T1 still alive. They had a knockout performance last game when they knock out Orange Rock 2. What an awful end for them, but Youngjin is just going off. 3 teams remain blank, and Box Gaming have had a hell of a game so far. 13 players have met their demise at the hands of this squad in this game. A nice hold now at the top of the hill. T1, absolute bulldozers, absolute units looking to climb and maybe challenge TSM Entity here. I mean, they're both going to finish with decent amounts of points, so if T1 can eliminate them now and win this one out, it's potential there. You know, Box Gaming, they have 12 kills already. If they can continue with this performance going forward, they might just be able to leapfrog you level up. It is possible. He spoke and it was so blank. TSM Entity lose a player, 2 left standing for the squad. 9 players are left in the final game here, blank. T1 atop the hill, Box Gaming with their fort. A TSM Entity with Jonathan and Clutch God down the hill. Who's going to be able to reign supreme? A nade found by Jonathan on towards Saden. The MVP from last, another nade in as well as Box Gaming start to chime in. T1 go down, 2 teams remain. 1 knock over towards break, and it's TSM Entity trying to move up. No one really holding the majority of the zone, but it's Box Gaming with their outpost there. Rez is coming through, but Louis catches another nade, and you don't want to be doing that. That's going to cook too long. Hugo at the back, able to bloom that smoke, and they can regroup now. Clutch God gets a resupply on the loot crate. Can the Box Fort cardboard become steel in these final moments to hold off against the last 2 remaining players for TSM Entity? Or can TSM Entity pull out the South Asian sledgehammer and slam through this one and get the chicken dinner, the second one of the day? Snaking through the grass. Box Gaming, 4 players alive. They've had so many kills this game, blank. I think they're up to somewhere around 14 overall. So a fantastic game for them to close things out. Clutch God though, spots break. Finds 1, brings it 3 versus 2. No one there for the refrag. Spraying down, pre-firing the tree. He knows there's potential for players to be there. And Louis tries to move out to get this res on board. Very, very close by, but so is Clutch God. The nades could come at any second. TSM Entity just over the top side. Utility is full. Box Gaming not wanting to give up a single inch. It's Jonathan and Clutch God, arguably 2 of the best players in South Asia versus 4 from Box Gaming after this res comes through from Louis onto break. Break does get that res on board, so now they're back to 4. TSM Entity biding their time. We're going to be going to phase 8 soon enough. Louis repositioning now as TSM Entity just trying to hold it down, trying to push up the board. Not really too likely that they're going to be able to leapfrog, but they want to hold on to it against T1. Remember, they're holding on to that spot. We'll see what they are able to do. Nade over the top from Box Gaming towards Clutch God, but he shimmies out the way. It's just the smoke as Louis on the off. Louis is on the off. That could prove absolutely instrumental for Box Gaming. They've got the lineup here, and Clutch God has to take down a couple of players if they are to make this work. Smokes are coming through, denying sight lines from TSM Entity. Clutch God drops up, tries to explode the vehicle. Bike goes down. Jonathan finds the cross angle. Nice crossfire for TSM Entity, but Clutch God gets spotted, and Box Gaming find the final chicken dinner, but blank. ที่จบ 12 กลับบ้านคุณผู้ชมครับไปอยู่แล้วเว้ย โอ้งานหยาบว่ะโอ้ยโอ้หมดคำพูดเลยว่ะเดินต่อมา มีกระดานครับอยู่ต่อเกมแล้วดูครับมุมนี้คัทช็อตครับไปเก็บคอนเซ็ปต์ได้มิสไซล์ครับน็อกทางฝั่งแล้วลูกครับมาวี่ครับโดนดับเบิลคิวจากมิสไซล์ โอ้ คิว จบ ครับ เล โอย นด็อกครับโยนเน็ตมาด้านหน้าครับของตัวมิสไซล์ครับแล้วดูหลังก้อนหินตรงนี้ลูกแล้วลูกแรกมันลูกขู่ลูกหล่อครับ
ล้นไปนิดเดียวคุณผู้ชมครับเกือบเหมือนกัน โอ้แล้วต้องดูครับผมมาวี่ครับ โอ้โหแล้วเนี่ยลูกนี้จากกิวครับไปน็อกทางฝั่งของตัวทีวันได้โอ้ CCP กับเซเดนก็ไม่เหมือนกันแล้วยอนจุนครับเป็นน็อกสเกลมาทางฝั่งตัวเบรกครับไปน็อกสเลเยอร์ได้เหมือนกัน ครับผม สุดท้ายครับน็อกวินเทอร์มาจากยูราแล้วดูครับจบอันดับที่10คุณผู้ชมครับ ใช่ฮะ ครับเดี๋ยวต่อแล้วดับเบรกครับไปน็อก4-2 โอพีจาก AND ครับ ดีไซน์ครับทีวัน ทางฝั่งของพิซายตอนนี้ฮะต้องเซตสโมกขึ้นมาครับแต่ทางตัวทีวันพยายามจะดึงเพื่อนกลับมาเหมือนกันครับออเรนจ์ร็อกก็อยากจะโถมใส่เหมือนกันนะฮะ ครับ ตัวรีเจ็คสกาเลตอยู่ด้านหลังครับแล้วบอสซ่าครับไปน็อกทางด้านเท็ดได้ครับ ครับผมดีไซน์ชายเดอร์ครับไปน็อกบอสซ่าแล้วชายเดอร์นี่ก็ CNG นี่ครับ CNG ไปงั้นกับ KOG ครับจบอันดับที่9คุณผู้ชมครับ โอ้แล้วมาดูเพลย์โซนเฟสถัดไปกันหน่อยครับเข้ากลางกลางที่โล่งเลยอะIND ออกไป1ครับ โอ้โหเป็นคิวอย่างต่อเนื่องของบล็อกเกมมิ่งชมครับตอนนี้แล้วเรียบร้อยครับคะแนนตอนนี้ผู้ชมฮะเรียบร้อยครับ PTR ครับอันดับ1ของทัวร์นาเมนต์นี้ครับ287 แต้มผู้ชมฮะ 9คะแนน ครับ เอ้ย แล้ว เสีย บล็อก ดาย เกมมิ่งครับหลุยส์ครับไปน้องพิสายได้ ไม่ใช่แค่9คะแนนดิ11คะแนนเลยฮะเพราะออเรนจ์ร็อกตอนนี้ก็อันดับขึ้นมาแล้วฮะอันนี้คือน่าจะไม่ผิดโผแล้วนะครับเพราะว่า Box Gaming ตอนนี้ยังอยู่กันครบครับอาจจะมีแซงขึ้นมาได้เลยครับอันนี้ต้องแอบวัดใจนิดนึงนะ โอ้โหแล้วเบรกครับสเปย์ยังต่อเนื่องกดนี้อยู่ตรงนี้อยู่2 แต้มแต่บล็อกเกมมิ่งตรงนั้นเกมนี้รู้ว่าจะมายังมีที่เกมมาช้าชมนะ ใช่ สุดท้ายครับไประเบิดคอนเซ็ปต์ได้แล้วดูครับพี่ก๊อตครับเก็บบล็อกทุกด้านกันแล้วมุมนี้เบรกยังกดต่อเนื่องอยู่โอ้แล้วคือจะกดต่อกับเนโยอยู่หลังรถตรงนี้นะเบรกกดตรงนี้รถระเบิดจากคนยังไม่ตายชมฮะเหนียวเหลือเกิน เรียกได้ว่าลุ้นกันจนตัวโก่งครับแต่ว่าตอนนี้ครับเพลย์โซนเฟสที่6ครับมาแล้วฮะกำลังเริ่มบีบครับผมทางด้านตัว Box Gaming เองก็โอ้โหท็อปฟอร์มจัดครับไม่รู้จะมาท็อปอะไรตอนนี้ครับแต่ว่า KOG ก็ใส่สุดเหมือนกันฮะ ต้องครับ นะแล้วบาก้าไม่มีของอะไรเลยครับบอสซ่าไปยิงทางด้านตัวซีกอสได้และเก็บศพทันทีฮะ โอ้โหแล้วเนตอีก1 ลูกครับไซเดนครับไปน็อกบาก้าได้ชมฮะ อุ้ยแล้วทางฝั่งของยอนจุนครับแกไปน็อกทางด้านลูฟ่าได้ครับเก็บศพทันทีฮะ ครับแล้วด้านหน้ามี KLG น็อกอยู่1ทางฝั่งตัวบาก้ามุมนี้ครับไซเดนยังไงดีมุมใกล้โอ้โหแล้วบอสซ่าพยายามจะยิงรถให้ทางแล้วดูครับชุบบาก้าขึ้นมาก่อนครับแล้วด้านหลังไซเดนขึ้นสะกบมาเจอซาร่าแต่ซาร่าไปฝั่งตรงนั้นลงเนินพอดีเป๊ะแล้วดูซาร่าขับทิ่มเข้ามาในวงต่อตรงนี้ซาร่าแล้วเรียกมาครับยอนจุนเก็บคิวไปได้ครับ ครับผม จบอันดับ4ครับดีเจกสกาเลตผู้ชมครับ โอ้โหแล้วทางฝั่งของตัวบอสซ่าก็โดนไปนะครับอีก1สควอตครับ KOG โอ้แต่เกมนี้มาอย่างเร็วเลยครับแล้ว Box Gaming ดูบอกว่าเกมนี้มีโอกาสสูงมากครับถ้าเทียบกันแบบว่าตัวต่อตัวนะทีมต่อทีมเลยครับโอ้ บล็อกเกมมิ่ง4คุณผู้ชมครับ12 คิวต่ำๆตรงนี้นะดูครับ ที่ประมาทไม่ได้คือทีวันตรงนี้ผู้ชมฮะเอาเหมือนกันผู้ชมฮะต้องรอดูครับ แล้วกลางวงตรงนี้เป็นทางฝั่งตัวที่แล้วนี่ครับเซเดนครับไปน็อกเนโยได้อย่างมุมนี้แล้วกดออกเอมี1ครับเป็นคิวของเซเดนผู้ชมครับคัชกอน โดนระเบิดไปครับคลัชกอสตอนนี้ฮะเหลือกัน2คนนะสำหรับทางด้าน TSM ครับนี่ก็ง้างระเบิดรอใส่ทีวันอยู่ไงดีเป้งไหม กับพี่เมยอนลูกนี้ถึงยอนจนไม่ถึงครับนิดเดียวเหมือนกันครับลายนี้ เรียกได้ว่าเบาได้เบาเลยครับ Box Gaming ครับตอนนี้หยุดเขาไม่อยู่จริงๆฮะนะเซเดนเองแกก็สเปรย์ไปไหนไม่รู้ฮะรู้แต่ไม่มีคนนะโอ้โห โอ้ยแล้วดันไปเจอระเบิดพอดีก็เซเดนแล้วดูครับมุมไกลยอนจุนขึ้นมาปาดล้มไปถึงกับเบรกแล้วสเปรย์มาจากพี่เมย์ล้มยอนจุนไปได้เหมือนกันเหลี่ยมนี้สุดท้ายพังครับโอ้โหทีเด่นกับทางฝั่งบล็อกเกมมิ่งครับประสานงานงัดกับทางฝั่งตัวทีวันออกเกมเรียบร้อย ก็ดีแล้ว แล้วจัดมาก็บล็อกเกมมิ่งเหลือกัน4 คนตรงฮะอ้าวล่ะครับแล้วคัดก่อนครับไปเน็ตน็อกหลุยได้แล้วดูครับด้านหลังบอกเลยว่าเหลืออีกลืม เป็นกองทัพอ่ะ ครับ ใช้คำนี้เลยฮะโอ้แล้ว Box Gaming พี่เมย์ครับแกอ้อมมาเพื่อที่จะพยายามจะช่วยเพื่อนเหมือนกันครับแต่ตอนนี้เฟส7แล้วครับผมจะจัดก็จัดเลยครับ ครับ เหลือกัน2ทีมเนี่ยหาก็ได้เจอฮะนะตัวจนทานนี้ครับค่อยๆคลานมาเรื่อยๆฮะ ครับผม นะแล้วทางฝั่งของตัว Box Gaming เองตอนนี้เรียกได้ว่าชิวๆเลยฮะอยู่กันครบสควอตแบบนี้เล่นง่ายมากเลยครับสำหรับทางด้านตัว Box Gaming ครับ ถูกต้องครับนี่ครับ4-2แล้วขึ้นสโคปมาคัดก่อนกดใส่เบรกตรงนี้นะคัดน็อกไป1โอ้โหจังหวะนอนฉกของคัดก่อนผู้ชมครับมาดูครับตีพายเข้าขวาไปก่อนไม่มีใครผู้ชมครับมาดูครับหลุยส์ขึ้นมุมสูงมาเบรกครับพยายามคานกลับมาให้เพื่อนจุดไปดูครับลายนี้กับคัดก่อน
หลุยเองนอนรอนี่ผู้ชมฮะมาแล้วครับน่าจะชุบได้ไม่มีปัญหาว่าทีเอ็มไม่กล้าลุกขึ้นมาวัดตรงนี้ครับ4 คนต่อ 2ครับ ใช่ครับ ยังคงยากกว่าอยู่ดีตรงนี้ฮะ นะทางฝั่งของ Box Gaming เองก็ยังต้องใจเย็นเหมือนกันครับ เพราะว่าถ้าเกิดผีผามเดินขึ้นไปแบบว่าต้องโต้งอย่างเงี้ยก็โดน TSM ยิงสวนได้เหมือนกันครับนะแล้วทางตัว Box Gaming ก็ตอนนี้ต้องขยับเข้ามาใน Play Zone เฟสที่ 7 ฮะนะแล้วไหลมาเรื่อยๆครับหลุยเองแกก็ลุกขึ้นมาครับแต่ว่าโจนาธานเองแกจ้องอยู่ฮะ โอ้โหดูครับดึงยากดึงช้าแล้วตัวภาพมาครับเบรกเองต้องคานเข้าวงตามมาเหมือนกันตรงนี้ผู้ชมฮะ โอ้โหแล้วยิงขึ้นมาแบบนี้ครับผมแหมมีแบบว่าแจ๊บๆนิดนึงครับแล้วโยนระเบิดใส่ไปทางด้านคลัชกอสจะโดนหรือเปล่าฮะแต่เซนสโบกโอ้โถตกใจ โอ้โหดูครับดึงกันช้าสุดมากแล้ววงใหม่ก็ยังไปเข้าพื้นที่ด้านหน้าของทีเอ็มผู้ชมครับแล้วดูเหลี่ยมนี้พีเมย์ลุกว่าวิ่งไปทางขวาคาสกอตครับพยายามหันตามตรงนี้ครับผู้ชมฮะ ครับผม โอ้โหอะไรทั้งนั้นแล้วลุกขึ้นมาจั่วตรงนี้โจนาธานเรียบร้อยฮะเทรดกัน1 ต่อ 1ตรงนี้นะดูครับทางฝั่งคาสกอตยังปิดไม่ได้แล้วลุงนิโคยก้าโอ้โหบล็อกเกมมิ่งเทรดมาแล้วเรียบร้อยครับไม่ไหวครับจึงอยู่นั่นแหละฮะสุดท้ายครับบล็อกเกมมิ่ง Big factor di sini. Mereka ada circle. Mereka ada 4 orang. Oh, tapi OR jatuh 2. OR sekarang ni scout dijatuhkan, Mavi dijatuhkan dekat sini. Tim daripada Korea akan barbar ke arah mereka. Kalau mereka rata dekat sini, BTR dia auto world champion sebenarnya. Dia auto world champion. OR sekarang akan cuba sebaik mungkin untuk bangunkan yang lain-lain dekat situ. Orange Mavi dijatuhkan oleh Misa secara langsung. Tapi grenade tangan dia kena pada 2 orang daripada T1 juga tinggal 2 orang. Orange berjaya bangunkan satu player dekat situ. Semua akan dibalik oleh Yongjun untuk membangunkan ZZP dan juga Shaden dekat situ. You level up sudah pun dikeluarkan, dikuburkan. Dia orang punya plan untuk menjadi world champion. Tapi BTR dengan 1 player. Dan itulah Reaksi mula disentuh oleh Blue Zone sekarang ini. Ya betul tu. Tapi betul mereka sangat menunggu. Sangat mengharapkan. Player BTR kena mengharapkan Korea akan membantu mereka. Mungkin inilah yang mereka harapkan. Opa, tolong saya. Misal, tolong ratakan pasukan OR kerana memang sangat diperlukan. Sudah top 8. Jadi memang lagi kritikal sekarang ini. Ya, jatuh Firu. Meninggalkan kill. Sahaja mungkin rata. Dan dengan itu, dia boleh mati pada Blue Zone. Sehappy-happy yang dia mau. Sebab BTR auto world champion. Kali kedua, berturut-turut. Dia tak pernah keluar. Tapi mata dia dah cukup, lebih cukup untuk berada di tangga nombor 1. Bigetron Red Alien adalah juara Pmwl East untuk season 0, season 0. Yang ada peluang untuk, tak ada peluang pun untuk Box Gaming memecut, melainkan mereka membuat satu miracle di sini. Tapi tak boleh, tak cukup orang pun. Oh, mereka dah kill 12. Jim, kalau dia dapatkan chicken dinner dekat sini, dia sebenarnya boleh dapat nombor 2. Dia boleh memintas RRQ dan juga OR sebenarnya. Mereka jatuhkan Neo dekat sini. Mereka ada 12 kill. Pengejaran tengah dilakukan oleh Box Gaming pada waktu-waktu akhir sebenarnya. Box Gaming, mereka boleh dapatkan tempat nombor 1. Mungkin ada peluang sebenarnya. Neo ditembak berkali-kali oleh Break dekat sini. Kenderaan digunakan pakai oleh Luis. TSM masih lagi cuba menjadi raja di kawasan ini. Tetapi tak dapat kill itu. Break sedikit rendah. Luis dan juga Hyuga ditinggalkan di belakang. Waktu ini Clutch God akan terus ambil bagi dan gerak ke belakang. Ya, mereka tidak boleh feed kill ini kepada Box Gaming. Box Gaming perlukan begitu banyak kill. Begitu unrealistic tapi mungkin boleh terjadi. Box Gaming ketinggalan kalau kita lihatkan di sini. Memang 40 mata. Dan kalau Box Gaming dapat 21 kill, dia yang akan menang berlawan dengan Bigetron Ray Alien sebenarnya. Ya, kita buat kira mata sekarang ni. T1 Dia perlukan 27 mata. Bukan, dia perlukan 47 mata. So dia perlukan chicken dinner dengan 27 kill. 27 kill agak tidak realistik dekat situ. Tapi kita tengokkan bagaimana kiraan terakhir nanti. Sebab sekarang ini kita dah dapat mata terakhir untuk pasukan Bigetron tadi. Mereka berada di atas hingga 287. Box Gaming ada berapa tadi? Sekarang kita dapat Box. Luis akan masuk dulu. Grenade tangan top 3 sana untuk Box. Sekarang ini dia boleh ratakan 6 kali kalau dapat semua. T1 sekarang ini bersama dengan TSM. Masing-masing dengan 3 orang player. Box Gaming dengan 4 break sedikit rendah. Satu airdrop akan jatuh dekat tengah-tengah waktu ini. Circle memihak pada Box Gaming dan juga TSM. T1 kena masuk daripada kawasan luar sedikit. Box Gaming ini adalah last dance mereka. Tarian terakhir untuk melakukan keajaiban. Kalau mereka boleh ratakan semuanya, mungkin
mereka ada peluang untuk masuk top 3. Itu boleh, tetapi yang paling penting, bolehkah sebenarnya kiraan kasar ini menyebabkan mereka number 1? Mereka sudah ada 13 kill, tapi saya rasa tak cukup. Kerana mereka ada 4, maksimum boleh kill ialah 5. Dan itu hanya akan memberikan mereka belasan markah. Mereka perlukan 20 lebih kill sebenarnya. Ya, Box Gaming mungkin sedikit terlewat untuk mereka, tapi mereka mencuba. Mereka tidak kira matematik sekarang. Mereka cakap chicken dinner dengan as many kill as possible. TSM letakkan 1 dekat sini. Box Gaming mereka kena barbar sebenarnya. Semua kill ni perlu mereka dapatkan. Break akan di knockdown. Pmwl dapat 1 dekat situ. T1 dalam masalah juga. Jonathan akan terus maju ke depan. T1 dikeluarkan secara langsung. TSM dengan 2 orang player. Break akan dibangunkan. Sekarang 4 lawan 2. Box Gaming confirm chicken. Tapi cukup atau tidak point dia. Dia akan dapatkan 1 lagi knock. Ya, Bluis akan di knock dekat sini. Dan sekarang smoke akan dibaling oleh Yuga untuk membangunkan Luis. Luis akan pergi ke belakang perlahan-lahan. TSM mencari chicken juga. Tapi Box Gaming number advantage ada pada dia. Oh, walaupun mereka menang, walaupun Box Gaming menang di sini, tentunya mereka sangat kesal dengan apa yang berlaku di dalam Sunhawk tadi. Kalau mereka menang di sini, mereka saya rasa tak cukup markah. Tapi kita akan tengok kiraan yang terakhir. Di sini TSM Jonathan, dia boleh melakukan perkara ini. Dia pernah melakukan keajaiban dengan menang chicken ini 1 orang. Mungkin dia boleh lakukan keajaiban 2 lawan 4. Keajaiban mungkin boleh berlaku sekarang. Minit ke-25 sudah. TSM NTT masih lagi dengan 2 orang player. Clutch God menembak break. Dia dapat 1 knockdown. 3 lawan 2. Match akan reset semula. 40 bullet untuk Clutch God. Tidak ada scope kali ini untuk M4 beliau. Di belakang dia ada 1 AWM. Luis melompat-lompat mencari target. Break akan merangkak ke belakang untuk diselamatkan semula oleh Luis. Walaupun mereka ada number advantage, masih lagi bermain seselamat yang boleh. Minit ke-26 ni Jihanta. Ya, minit ke-26. Baru seka ke-7 sebenarnya. Dah ramai dah mati. Satu sebabnya adalah Box Gaming memang mengejar sebanyak kill yang boleh. Disebabkan itu banyak yang mati secara awal. Tapi T1 tadi malang sekali untuk Box. Kebanyakannya diambil oleh TSM NTT dengan balingan-balingan bom yang cantik. Sebenarnya Box Gaming sedang cuba membuatkan mereka kehabisan. TSM NTT kehabisan bom. Dan sekarang kita boleh nampak mereka seolah-olah memang dah habis utility semuanya. Luis akan berlari ke depan sekarang ini. Masih lagi 4 lawan 2. Break akan merangkak jauh daripada kawasan Blue Zone seterusnya. Pimai ditugaskan untuk menjaga Clutch God. Jonathan dan juga Clutch God. 2 cacing berlawan dengan 4. Juga sudah membangun. Oh, satu balingan yang hampir. Tapi tidak cukup. Oh, bukan. Dia membaling asap di situ. Ya, Clutch God sebenarnya dia ada line of sight yang menarik sebenarnya. Kalau dia betul-betul selari, dia boleh spray semua 3 orang sekali dekat sini Clutch God. Dia mungkin akan nampak Pimai terlebih dahulu dekat situ. Break betul-betul depan mata. Tapi dia punya push lebih tinggi sebenarnya. Jonathan juga akan melihat pada 2 lagi player di hadapan. Tembakan lepaskan. Dia akan bangun. Dia akan bangun. Tembakan lepaskan Jonathan. Mungkin kesilapan sedikit. Tapi Clutch God akan jatuhkan break. Pancingan yang cantik. Jonathan ditembak. Tidak cukup dekat situ. Jonathan dijatuhkan oleh Box Luis. Game tamat. Winner-winner chicken dinner. Box Gaming. Box Gaming, game terakhir. Oh, dia kira pula kill dekat situ 12. Ada tambah 3, tambah 1. Itu berapa ya? Kita boleh kira 16. 16. Tapi BTR punya logo ditunjukkan bahawa mereka lah world champion dekat sini. Tahniah diucapkan kepada BTR.